This is Jamali Kamali's mosque and tomb. What we can see will be discussed. Alright, so this mosque is a Lodi period mosque. So I'll tell you a bit of architectural features. I know it's boring, still. So this arch you see, that's what I was calling a true arch. Okay, so there is a keystone in between, just where it is pointed. ये जो टेक्नोलॉजी है ये arches were brought about by Turkish rulers or whoever came after 1206. So this is a Lodi period mosque और इसमें आप देखेंगे कि जो ग्रेश जो पत्थर अरावली के साइड में मिलता है and a very less use of red sandstone because जितना use red sandstone का sandstone is good for carving, so you can see the parts which are made of red sandstone are heavily carved. Not that heavily, but yes, better than the other ones. And the ones that are, of quartzite are mostly for structural support. So, and The Yellowstone. you can see the inside of the mosque. So, us taraf, and That's the Qibla wall. arch in between is called the mihrab. And you mihrab. face towards that and pray, and that is obviously western side of, directionally west. तो मॉस्क really situated in between these two mosques. जो evolutionary process आप देखेंगे तो architecturally आपको ये पता चलेगा. Name of the mosque. The name of the mosque is जमाली कमाली. अब जमाली कमाली क्यों है? Because of course because two people were named जमाली कमाली. पहली जो है जमाली जो है वो he was a Sufi saint. Who used to live during the time of Sikandar Lodi and continued to live till the time of Humayun. So, अब बताइए सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बाबर, हुमायूं, 4 रूलर्स उन्होंने देखा है, 4 रूलर्स देखे और पूरा डायनेस्टी बदलते हुए देखा है. सो ही वाज अ यू कैन अंडरस्टैंड कि किसी सुल्तान ने या किसी बादशाह ने आके उसको मारा नहीं, तो ही वाज अ पीसफुल गाय एंड ही यूज्ड टू बी इन अ गुड रैपो विद ऑल द सुल्तान्स एंड बादशाहs. सो ही यूज्ड टू राइट पैनेजाइरिक्स फॉर द बादशाह, जो प्रेजेस ऑफ द बादशाह और द सुल्तान. सो बेसिकली अ सूफी सेंट एंड सूफीज्म का आई गेस सबको थोड़ा बहुत प्रीम. So कई बार बॉलीवुड के पॉपुलर गाने सॉन्ग यू विल फील दैट इट इज रिटन फॉर अ लवर, but it is actually written for composed for the supreme. So the love of yours is for the supreme, which is considered like romantic love. तो अमीर खुसरो के साथ निज़ामुद्दीन जो रिश्ते थे वो भी वैसे थे. उनके जो पोइट्री है वो भी आप सुनेंगे तो मोस्टली वो रोमांटिक मूवीज में यूज होता है. बट एट द एंड ऑफ ईच सॉन्ग यू ऑलवेज हैव दैट वन पैराग्राफ वेयर अमीर खुसरो सेज खुसरो निज़ाम के बलबल जाइए, राइट. सो दैट इज हाउ we understand that this was not for a lover but it was actually for his guru, सूफी गुरु जो होते हैं. तो जमाली भी वैसे ही थे. वो सिकंदर लोधी के टाइम पे he used to राइट पोइट्री, सूफी पोइट्री. सो अंदर अब जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें पढ़ना नहीं आता है, विच इज़ जमाली. उनका रियल नेम वॉज फजलुल्लाह सुहरावर्दी. सो उन्होंने लिखना जब स्टार्ट किया तो उन्होंने अपना पेन नेम रखा जलाली, बट अपेरेंटली इट गॉट चेंज टू जमाली बाय वर्ड ऑफ माउथ, और मे बी हिज गुरु टोल्ड हिम कि तुम जलाली मत करो, जमाली करो. सो डजंट मैटर व्हाट द नेम इज, बट द नेम ऑफ द मॉस्क इज जमाली. Jamali died when he went to a campaign with Humayun to Gujarat. तो क्या हुआ? So well, this is the mosque. That's what it's so beautiful. Facing the west, and people would, and there's some prayers that are engraved here in Persian, as you can see. So as I was saying, most of the designed parts are in red sandstone, you see. And this is the mihrab wall. It's called mihrab. There's nothing beyond.
What's the wall called, you said? Qibla. And this one? No, the arch is called the arch is called Mihrab. 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 Okay. Such a beautiful mosque it is. Jamali Kamal. It's Persian. Arabic Persian. Tank for wuzu, that is before entering the mosque you wash your hands and feet. That's what it is. So it's full of it is full of water. Jamali Kamali Mosque.